बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या शाहे रहीम अलकरम, या शाहे रहीम अलकरम, या शाहे रहीम अलकरम, या शाहे रहीम अलकरम, 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 शाहे रहीम अलकरम। नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी आजरिमाम। या मौलाए मेहरबान, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला। या मौला मदद फरमा, मदद फरमा। तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद, and thank you for joining us. This will be our third part on Imam, Momin, and Farmans. As you all remember, we were talking about Imam and the relationship between Momin and Imam is a unique relationship where there is a part that a Momin plays and another part that Imam plays. Momin, he pledges that, Ya Mullah, I'm here seeking guidance, and I would do anything and everything to follow your Farman. With my tan, man, and dhan, whatever it takes. And in return, Imam promises, I will give you my entire life and I will guide you. And I am always with you. Wherever you are, I am always with you. In all time and in all ages. Imam is always with us. Even when we do not fulfill our promise to the Imam, Imam is still there for us. And Imam remains firm on his promise, because that is the promise of Allah. And what is the promise of Allah? That I will always guide you. And whenever my guidance comes to you, and if you follow, you have nothing to fear. And I am that Lord
in the heaven and on the earth. And I will always be with you. Wherever you would turn, I will be with you. If you see me, I will be Zahir. If you do not see me, I'll be with you in my batin. If you don't feel me in one time or the other, I always be with you, regardless of what you believe. I am with you from the day one, awwal, and I will remain with you until the last day of Qiyamah. I'm always with you. And then those are the words which you hear the Imam uses in his Farman. And Imam does not use those words just for the sake of using some words to make you happy. Because those are the true words. The Khudawandi Noor Maulana Shah Rahim al-Hussaini Hazir Imam, Salawatullah alayhi, when he says that you are with me and I'm with you and I'm always with you, that means he is always with you. Physically, he may not be, and you may not see him. But if you believe in him, you will feel him. And he says, feel my presence. Feel Allah in your life. If you just take last 15 Farman of the Imam Zaman, our current 50th Imam, only 15 Farman. Inshallah, now we have few more Farman that in the future we will bring it to you and we will discuss. But only if you take 15 Farman up until the last month. And if you go to those paragraphs and those lines where Imam is speaking to the Jamaat, the Mu'minin, where he's saying to you, I am always with you and you are always with me. And just take those paragraphs out and those lines out, you will instantly understand that Imam is telling us something. Because only omnipresent is Noor-e Khudawandi. The two ayat are found in the Qur'an, and I'm sharing with you on your screen. One comes from Surah 38, ayat 66, and other comes from Surah 6, ayat number 3. That Allah of the heavens and the earth, and all that is in between them, there is only one God. Even though for our understanding, we talk about Noor-e Mujarrad and Noor-e Mujassam. But Noor is one. Allah is one. They are not two. Nauzubillah, there would be shirk on our part. There is only one Allah
the true Allah in the heaven and in the earth. One, absolute Nur, Nur-e-Mujarrad. Remember, he is Awal, Akhir, Zahir, and Batin. Nur-e-Mujarrad, absolute Nur, Nur-e-Mujassam, embodied Nur. But the Nur is one. And this is what you will find. The Tawil and the meaning, the understanding in a simple words in the Farman of the Imam Zaman, that I am always with you. And he says, whenever you feel grateful, be grateful to Allah. Which Allah? The one in the heaven or the one on the earth? Which one? If in our mind there are two Allahs, Nauzubillah, there would be a shirk. There is not but one Nur, and one only. And those are the ayat in front of your screen. Imam is always here to guide the humanity. Our topic for the day is Chain of the Light of Imamat, Silsila Noor-e Imamat. Such a Noor, such a chain, which is unbroken from the day one, from the time of Adam. Some of us believe, and they may not be so wrong in their understanding, that we start to count our Imam from the time of Mullah Ali, only 1400 years ago. But at the same time, we also believe that this world cannot stand on its own without the Imam Zaman present. And with that understanding, we understand that there were Imams in the time of Adam, in the times before Hazrat Muhammad Mustafa and Ali Murtaza Salawatullah alayhi. And we have the Imams in our time, and we have our current Imam, Shah Rahim al-Husaini, Hazar and Mawjood Imam. हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? इमाम नूरन अला नूर, सिलसिला नूर इमामत हर हमेशा जारी व सारी है। ये अनटूट सिलसिला रोजे अव्वल से रोजे आखिर तक जारी रहेगा। हमारे कुछ बिलीफ है, ठीक है, वो अपनी जगह पर। हम कुछ इस तरह से मानते हैं कि मौला अली से इमामत का आगाज हो गया। बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे छठे साइकिल के पहले इमाम अली मुर्तजा ही है बेशक, लेकिन फिर हमारा ये भी अकीदा है कि ये दुनिया इमाम के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। और ये अकीदा भी दुरुस्त है
क्योंकि इमाम तो आदम से चले आए हैं और ता क़यामत रहेंगे, और हर हमेशा इमाम दुनिया में हाजिर तो मौजूद रहते हैं। आप कुरान की इस आयत को देखें, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 124। खुदावंद ताला फरमाते हैं कि जब हमने इब्राहिम को कुछ इसमें आजम से आजमाया और जब वो उसमें कामयाब हो गए और जब उनके अंदर नूर मुकम्मल हो गया, तो हमने उनको लोगों का इमाम बना दिया। तो आप देखें, ये 4000 साल पुरानी बात हो गई, ना कि 1400 साल कबल, क्योंकि मौला अली 1400 साल कबल आए थे, जबकि हजरत इब्राहिम 4000 साल कबल। और कुरान के अंदर सबसे पहले, सबसे अव्वल अव्वल हजरत इब्राहिम का जिक्र है इमाम के उन्वान से, कि हमने तुम्हें लोगों का इमाम मुकर्रर किया। अगर आप इस आयत के साथ एक और आयत जोड़ दें जो सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 है, तो दूसरे नामों के साथ आपको ये नाम मिलेगा कि हमने इब्राहिम और उसकी आल को और इमरान अबू तालिब और उसकी आल को लोगों के लिए चुन लिया और सब पर बरगुजीदा किया। Now, if we come to the Quran, as we have two different views and two different beliefs, and they are both correct in their own. We believe Mullah Ali is our first Imam from the time of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, the sixth cycle out of seven. Out of seven. And that is correct belief. But at the same time, when we say that there are always Imam present in this world, and if we come into the Quran, in this Surah Baqarah, ayat number 124, Allah speaks about Hazrat Ibrahim, that when I gave him some Isme Azams, some Kalimat, and when he fulfilled his obligations, I appointed him, I made him the Imam of the people. Now remember, Hazrat Ibrahim came 4,000 years ago, whereas Mullah Ali 1400 years ago. Matter of fact, in the Quran, the word Imam is first and initially used for Hazrat Ibrahim. And that even took place 1400 years ago. And if you connect one more ayat with this ayat, and that is Surah Al Imran, ayat number 23. Along with the other names, you will find that I have selected and chosen Hazrat Ibrahim and his progeny, Nuran ala Nur, and Hazrat Imran Abi Talib and his progeny, Nuran ala Nur, amongst the people. And I made them Buzruk and chosen for the people, one after the other. The concept of Nuran ala Nur
the chain of the light of Imamat. اور یہ ہو گیا سلسلہ نور امامت. اور ہر ہمیشہ دنیا میں خدا کا نور اماموں کی صورت میں ایک کے بعد ایک جاری و ساری ہمارے سامنے حاضر و موجود ہے. تو جب امام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا نور جو زمین و آسمانوں کا نور ہے اور ہر چیز جو اس کے درمیان میں ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے ساتھ وہ نور اور اس کے اندر ہم سب وکل شعین اصنافی امام مبین کے کلیے کے مطابق سموئے ہوئے ہیں. ہر چیز جس میں ہم بھی شامل ہو گئے. And now when we come into Surah Yasin, ayat number 12, we understand that how Imam's Noor, the Imam Mubin, have encompassed everything between the heaven and the earth, and that includes the humans, the mu'mineen, you and me. We are all encompassed in the Noor Imam Mubin. ہر چیز سموئی ہوئی ہے امام کے اندر. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہ تصورات جو ایمان کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم قرآن کی دلیلوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ آج اس ماڈرن زمانے میں جب ہم انٹر ایکٹ کریں گے ہماری جماعت کے ان ممبران کے ساتھ جو ملٹی فیتھ سے آئے ہیں، جو آپ کے گنان کو نہیں جانتے ہیں، جو آپ کے امام کے فرامین کو بھی نہیں جانتے ہیں، مگر شاید وہ قرآن کو جانتے ہوں گے، شاید وہ خدا کی کسی اور کتاب کو جانتے ہوں گے، تب آپ ان سے ان قرآنک ریفرنسز اور دلائل سے بات کر سکیں گے. Why are we bringing this to you today in this series? As we interact more broader with our interfaith partners, Jamaati members, and the families of our Jamaati members, they would not know your Quran, and they would not know about the Farameen of the Imam. But hopefully, they would come with the knowledge of the Quran or one of the holy books. And then these references will come handy and useful. When you will speak to them, you will come from the side of the truth, of the knowledge, of the understanding, of the facts, with good references, not just our blind faith. تو جب ہم ان سے باتیں کریں گے تو ہم ایک علم کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، ایک علمی نقطے کے ساتھ، ایک اچھے نظریے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہ ریفرنسز، نہ کہ صرف بس یہ ہمارا یقین ہے. یقین کے ساتھ آپ کے پاس میرٹ ہوگی، علم ہوگا. تو جب آپ بات کریں گے ان سے تب ان کو اندازہ ہوگا کہ اسماعیلی طریقہ sits on logic and intellect، کہ اسماعیلی طریقہ کوئی اوکس پوکس طریقہ نہیں ہے.
ये ईमान के साथ एक लॉजिक भी रखता है और हिकमत भी। तब आप उनसे एक अच्छी मकाम पर, एक अच्छे ग्राउंड के ऊपर खड़े रहकर बात कर सकेंगे। और हमारा मकसद यही है कि हमारे पास ऐसा इल्म हो कि जो दलाल के साथ नरमी से, ह्यूमिलिटी के साथ जब हम उनसे बात करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, एज दे बिकम पार्ट ऑफ आवर जमात, आवर फैमिलीज, we will be able to speak to them and they will be able to understand you. And you would not have to say, well, this is just our belief. You will have a solid ground to stand on. Two more references for the friends who are making notes. You may take the screenshot if you like. Quran also talk about Imam Muttaqeen, Imam of the righteous. And that is coming from Surah Al-Furqan, ayat number 74, where Allah says that these prayers are the prayers of the Imams. That every Imam prays that, Ya Allah, grant us from amongst our wives and our children, offsprings, coolness of eyes, and make us an Imam for the Muttaqeen, righteous ones. For those mu'mineen who believe and follow, make us Imam for them from our wives and our children. This is the prayer of the Imam for the Imams to come. Inshallah, if you are a person of understanding, this ayat is easy for you to understand. And the last ayat that shows that Imam is always present in this world. Allah says in Surah 17, ayat 71, that on the day of Qiyamah, every people will be called upon with their Imam of the time. If there was no Imam in one time or the other, which Imam would these people be called upon with? This ayat clearly shows that there is an Imam in every time, and every people of every time will be called upon with their respected Imam of the time. तो यहां पर हमारे सामने जो आखिरी दो कुरानिक रेफरेंसेस है, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक जो इमामों की दुआएं हैं कुरान के अंदर, और उसमें से एक दुआ ये है कि या अल्लाह, हमारी बीवियों में से और हमारी औलादों में से हर हमेशा आंखों की ठंडक और इमाम मुत्तकीन मोमिनों के लिए इमामत का सिलसिला जारी रखना, और उनमें से इमाम के बाद इमाम जारी करना। यानी कि हमारी औलाद में से हमेशा इमामत का सिलसिला, इमामत का नूर का सिलसिला जारी व साली रखना। और इंशाल्लाह जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये आयत आसान है।
آخری ریفرنس جو وعدہ الہی ہے مومنوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے کہ ہر انسان کو روز آخر ان کی موت کے دن ان کے زمانے کے امام کے توسط سے بلایا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا زمانہ ہوتا کہ جس میں امام حاضر و موجود نہ ہوتا تو پھر کس طرح سے کون سے امام کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں کو بلاتا؟ یہ سورہ 17 آیت 71 ہے کہ ہم ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر زمانے میں ایک امام حاضر و موجود رہتا ہے۔ آئے کچھ ہسٹری سے لیسن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ ہر زمانے میں امام ہوتے ہیں۔ ہم نے پیغمبروں کے نام سنے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک، لیکن شاید ہم نے ان کے زمانے کے اماموں کے ناموں کو نہیں سنا یا نہیں پڑھا یا نہیں جانا یا نہیں پوچھا کہ بھائی آپ جب کہتے ہو کہ ہر زمانے میں امام ہے ان کے اسما کیا ہے؟ کہ خالی ہوا میں بات ہو رہی ہے یا حقیقت ہے؟ So let's come and try to learn that we said there is and there are always imams in all the time. And in our history, we have heard the names of the great prophets, Natakin, messengers, so many. But we have never heard the names of the imams. We have never read it. Nobody told us. We were not aware of. And we never even asked. When our missionary comes, when our scholar comes and says that this world cannot live on its own without the Imam, then tell me the name of the Imam of the time of Adam. We did not ask. Because we only know the names of the last 49 Imams along with our current 50th Imam. Then who were the Imams before them? And we cannot be just talking in the air. And there are great books written by our Dais and Hujjatan, and there are multiple books in which you will find these references. The names of the Imams before Mullah Ali. Here is a good sample of that. I'm not giving you every single name of the last 6,000 years, but a good sample of it. And then follow the Farman of the Imam. And what does Imam says? Do your personal search. If you want to understand our tariqah, learn from the history. Read those great books of the Dayan and Hujjatan. تو یہاں پر جو نام پیش کیے جا رہے ہیں وہ صرف چیدہ کچھ نام ہے، پوری لسٹ نہیں پیش کی جا رہی ہے۔ باقی کا کام آپ پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ آپ امام کے اس فرمان کے مطابق کہ آپ اپنی ذاتی کوشش کر کے علم کو حاصل کریں اور ہسٹری سے آپ اپنے طریقے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ Excuse me.
Sorry, my screen went down. Let me share. Can you still see my screen? Yes, we can see it, but there was a message that your battery is running low. Okay, all right. So, Imams are always present in this world to guide the mu'mineen. An example, before Hazrat Adam, Imam Hunayd, and with and after Hazrat Adam, Imam Shish. Now we are talking about Adam Sarandipi. And look at it. Our Dayan and Uchatan have given us the names of the Imams of the time of Adam. Otherwise, this ilm will be hocus pocus without any solid names or proofs. With Hazrat Noah alayhi salam, before him, Hazrat Maulana Hud, and with him and after him, Maulana Sam. With Hazrat Ibrahim, before him, Imam Maulana Saleh, and with him and after him, Imam Maulana Ismail. In the time of Hazrat Musa, before him, Hazrat Imam Maulana Ud, and after him, Imam Maulana Harun. In the time of Hazrat Isa, before him, Imam Maulana Khuzaima, and with him and after him, Imam Maulana Shamoon. तो आप देख सकते हैं कि हमारे दाइयों और पीरों ने न सिर्फ जबानी बल्कि अपनी किताबों में उन इमामों के अस्मा बयान किए हैं जो आदम यानी कि आदम सरदीपी से लेकर आज तक जो इमाम गुजरे हैं मौला अली से पहले उनके अस्मा बयान किए हैं जैसा कि आदम से पहले इमाम हुनैद और आदम के साथ और उनके बाद इमाम शीश, हजरत नोआ के साथ इमाम मौलाना हुद और उनके साथ और उनके बाद इमाम मौलाना साम, हजरत इब्राहिम के साथ और उनसे पहले इमाम मौलाना साले और उसके बाद इमाम मौलाना इस्माइल, हजरत मूसा से पहले इमाम मौलाना ऊद और उनके साथ और उनके बाद मौलाना हारून, और हजरत ईसा से पहले इमाम मौलाना खुजैमा और उसके बाद मौलाना शमून। और इसके बाद अगर हम अपने छठे साइकिल के अंदर जो हमारा पिछला दौर था जो हजरत मौलाना अली से आगाज हो गया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उससे पहले इमाम मौलाना इमरान अबी तालिब और आपके बाद मौलाना अली मुर्तज़ा जो हम अपनी दुआ में पहले इमाम छठे साइकिल के दौर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप तमाम हदीस सकलैन को जानते हैं और इसी के साथ आज हमारा सेशन तमाम होगा। हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। और हदीस सकलैन क्या है? ऐसा नहीं कि मौलाना अली के बाद कोई सिलसिला नूर इमामत खत्म हो गया।
या हुजूर जो आखिरी पैगंबर थे, खातमुल अंबिया थे, उसी के साथ खुदा का पैगाम और खुदा की हिदायत और खुदा का नूर तमाम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। आपने क्या फरमाया कि मैं आपके दरमियान में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, और वो एक मेरी किताब यानी कि कुरान, और एक मेरी इतरत अहले बैत मौला अली को छोड़े जा रहा हूं, और उसकी आल से इमामों को छोड़े जा रहा हूं। और जो कोई भी इसको मजबूती से पकड़ रखेगा वो कभी भी पारा पारा नहीं होगा। और ये दोनों चीजें ता क़यामत तक, हौज़े कौसर तक हर हमेशा साथ रहेंगी। जब तक कुरान है तब तक इमाम है, और जब तक इमाम है तब तक कुरान है, और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। So we will finish our session for the day, and inshallah we will continue from Hadith Saklan tomorrow. As Huzur says, I'm leaving you with two heavy things, and those are my book, the Quran, the Book-e-Ilahi, and my Itrat, Elebat, my household, my progeny. The Ali and the Imams from him. And they both will remain together. So hold on to both of them. And if you do, you will become part, or you will not be scattered. And both of them will remain together. As long as Quran remains, Mullah Ali, the Imams from my progeny, Ali Nabi Aulad Ali, will remain. And they both will remain together and will meet at the Hawz-e Kausar on the day of judgment. We will start from here. We are not done with this hadith. Inshallah, tomorrow. Ji.